Okay, so the two equations that we have derived so far. So these two equations, which are uh, also known as telegrapher equation, or you can also call them time domain transmission line equations. Okay, so time domain transmission line equations, or alternate name जो मैं आपको दे रहा हूँ, I'm calling them as telegrapher equations. Now, in these equations, there is a variation with respect to time. So these equations are valid for any possible variation of current with respect to time or any possible variation of voltage with respect to time. But if you remember in our first chapter, we have specifically mentioned that in this course, our focus will be on sinusoidal variation with respect to time. So whenever we have sinusoidal variations, then the parameters, that is voltage and this current, they can be represented by phasor notation. Okay, so what I am saying is, for sinusoidal steady state condition, the two equations simplified to, so from the left hand side, what you will get, uh, so what will happen, let me write it over here. So this time domain voltage, we are going to replace it with a voltage phasor, which is only function of z. Similarly, current, time domain current, is going to be represented by its phasor notation, and I'm going to use this symbol for phasor. So now, what will happen to the left hand side? On the left hand side, you will get derivative of voltage phasor with respect to dz minus r I of z minus, and of course, whenever you have sinusoidal variation, then we know that this d by dt is replaced by j omega. So what you will get j omega L I of z. And similarly, from the second equation, you will get the ordinary derivative of current phasor with respect to z minus g voltage phasor minus j omega for d by dt c v of z. So these two equations, they get transformed to this form whenever you assume that the variation is sinusoidal with respect to time. So these two equations, we can take I of z as common, and in the second equation, we can take v of z as common on the right hand side. So इन दो equations को मैं लिख सकता हूँ in this form.
So these are the same telegrapher equations, but now in the phasor form. Now, another important point that we need to look at it, that the two equations that we derive after transforming the field theory problem to circuit theory problem with the help of transmission line theory, we see a quite similarity with what we derived in chapter number 1. Okay, so let me uh, remind you that in chapter 1, when we use Maxwell equation and then we convert Maxwell equation to another equation called wave equation, so the two equations that you right now look at is they are very similar to मैक्सवेल इक्वेशन. सो मैं इसमें एक इक्वेशन लिख रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि किस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशंस आई हैं दे देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू मैक्सवेल इक्वेशन. ओके, तो फील्ड थ्योरी में अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो एक मेरे पास यहाँ पे एक और पॉइंट मैं मेंशन कर लेता हूँ कि इन इक्वेशंस में जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स हैं वो वोल्टेज फेजर्स और करंट फेजर है जो आपको नजर आ रहे हैं, ये है और ये. और इस तरीके से सेकंड इक्वेशन में भी जो दो अननोन पैरामीटर्स हैं वो ये वोल्टेज फेजर एंड करंट फेजर. अगर आप मैक्सवेल इक्वेशंस को देखें, मैक्सवेल इक्वेशंस में हमारे पास एक है कर्ल ऑफ ई है और कर्ल ऑफ ई को हमने देखा था कि इट इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच. और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है कर्ल ऑफ एच वाली, एम्पियर्स लॉ. which is like this. Of course, अगर कंप्लीट फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास फिर जे भी है और यहाँ पे हमारे पास फिर हाइपोथेटिकल क्वांटिटी है एम पी. ठीक है. नाउ इफ यू कंपेयर कि लेफ्ट साइड पे आप रिलेट करें कि वोल्टेज जो कि सर्किट थ्योरी में हम यूज करते हैं और फील्ड थ्योरी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं विच इज वोल्ट पर मीटर. ठीक है. और यहाँ पे करंट है और मैक्सवेल इक्वेशन में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड है having units of ampere per meter. Magnetic field is ampere per meter. Electric field is volt per meter. So of course, electric field is related to voltage and magnetic field is related to current. In Maxwell equation, on the left hand side, अगर आप देखें ये जो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं कर्ल ऑपरेशन को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इसमें क्या आता है आपके पास, व्हाट इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन जो आपको परफॉर्म करना पड़ता है वो कौन सा होता है? कर्ल ऑफ ई में क्या करना पड़ता है हमें ई के साथ? डिटरमिनेंट. वो तो आप उसका मुझे वो बता रहे हैं कि हाँ, हम कैसे फाइंड करेंगे एक्चुअली कौन सा ऑपरेशन कर्ल ऑफ ई में हम क्या चीज फाइंड कर रहे होते हैं मैथमेटिकली, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं ई के ऊपर? नो वन नोस कि कर्ल ऑफ ई में कौन सा ऑपरेशन हमें अप्लाई करना पड़ता है? सर डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ऑब्वियस. इसका डेरिवेटिव आप जब लेते हैं तो ऑफ कोर्स इसमें डी बाई डी एक्स भी होगा, डी बाई डी वाई भी होगा, डी बाई डी जेड भी होगा. ठीक है. और ये क्यों आप डेरिवेटिव तीनों डायमेंशंस में इसलिए रहे होते हैं कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हम अप्लाई कर रहे हैं वो तो किसी स्पेस में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, 3D स्पेस में अप्लाई कर रहे होते हैं. तो इसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा.
इस तरीके से अगर आप कर्ल ऑफ एच फाइंड करते हैं तो उसमें भी मैथमेटिकली आपको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है कि एच विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या वेरी, किस तरह वेरी, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है. सो द पॉइंट इज कर्ल ऑफ ई हो या कर्ल ऑफ एच हो, एक्चुअली हम क्या, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं इन 3D स्पेस. इफ यू कंपेयर विद दिस इक्वेशन जो भी हमने डिराइव की हैं, इनको अगर आप देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि आप वोल्टेज का डेरिवेटिव ले रहे हैं जेड के अलावा. सो हमारे पास सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है जो कि डी जेड के अलावा है, और उसका रीजन ये है कि हमने जो सर्किट, हमने जो अज्यूम किया हुआ था उसमें हमने, इफ यू रिमेंबर, मैंने क्या कहा था कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है जिसको हमने अज्यूम किया था कि वो जेड एक्सिस के अलोंग लाइक कर रहा है. तो ऑफ कोर्स हमारा सिग्नल तो सिर्फ इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास अब एक गाइडेड मीडिया है. तो गाइडेड मीडिया का मतलब है कि डिपेंड करेगा कि मैंने तो अज्यूम किया है कि ये जिस डायरेक्शन में ट्रांसमिशन लाइन ओरिएंटेड है वो जेड एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन ऑफ जेड ही है. तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ जेड का डेरिवेटिव होगा. बट द सिग्नल इज नॉट वेरिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड नॉट वेरिंग अलोंग वाई एक्सिस. तो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई जो डेरिवेटिव है वो जीरो के बराबर है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज वेरी सिमिलर टू दिस थिंग. सिमिलरली ये जो आपके पास है डी आई बाई डी जेड, इट इज वेरी सिमिलर टू दिस थिंग. सो आपको कंपैरिजन नजर आ इजिली, मैं सिमिलरिटी बता रहा हूं आपको कि ये जो इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इट्स, यू कैन कॉल इट कि इट इज द स्पेशल केस ऑफ कर्ल ऑफ ई, जिसमें आप सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग डेरिवेटिव ले रहे हैं. एंड इट मेक सेंस कि इस वक्त जो प्रॉब्लम हम कंसीडर कर रहे हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में सिग्नल ट्रेवल कर रहा है. तो ट्रांसमिशन लाइन में तो जिस ट्रांसमिशन लाइन जिस एक्सिस के अलोंग आपने रखी होगी उसी एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेगा. So that is why we have only one derivative. Similarly, on the right hand side, अगर आप देखें हमारे पास है j ओमेगा l i of z, और यहाँ पे भी है j ओमेगा h. सो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो टाइम वेरिएशन है वो रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेस वेरिएशन के साथ. इन अ सिमिलर मैनर करंट की जो टाइम वेरिएशन है, the time variation of current is related to space variation of voltage. And in this expression हम अगर हम देखें, the time variation of electric field is related to the space variation of magnetic field. And over here, the time variation of voltage is related to the space variation of current. So these two equations that we have derived by using the lumped circuit model of a transmission line, the mathematical equations that we come up with, they are very similar to the Maxwell equations. So अब उसी concept को हम यूज करेंगे कि जब हमने इन दो मैक्सवेल इक्वेशंस की बात की थी तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या था. हमने कहा था कि हमारे पास दो अननोन्स है, हमारे पास एच भी अननोन है, ई भी अननोन है, ई भी अननोन. तो इन दोनों इक्वेशंस में अगर इस इक्वेशन को मैं यूज करूं, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, तो प्रॉब्लम ये है कि एच भी अननोन है, ई भी अननोन है. और अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं तो इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि ई भी अननोन है, एच भी अननोन है. तो हमने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमने क्या डिराइव किया था, वेव इक्वेशन. और उस वेव इक्वेशन में क्या था कि हमारे पास या तो एक ऐसी इक्वेशन आ गई थी कि जिसमें सिर्फ ई था, या एक ऐसी इक्वेशन हम डिराइव कर सकते हैं कि जिसमें एच. नाउ वी आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. इफ आई यूज दिस इक्वेशन and solve it, I will face trouble because this is unknown as well as this is unknown. If I use this equation to find these two unknowns, I cannot, because this is unknown, this is unknown. So what I can do is I can take these two equations and transform them into an equation that will either have current or it will have only voltage. तो अब हम यही काम इन इक्वेशंस को करेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि सिर्फ ऐसी इक्वेशन हो जिसमें सिर्फ या तो आई जेड हो या जिसमें सिर्फ और सिर्फ
v ऑफ z। तो फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और दोनों में से कोई एक भी हम फाइंड कर लें तो फिर दूसरे को हम इस इक्वेशन से फाइंड, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आई ऑफ जेड पता चल जाए तो फिर इस इक्वेशन को यूज करके मैं वी ऑफ जेड निकाल सकता हूँ, या अगर मुझे वी ऑफ जेड पता हो तो मैं इस इक्वेशन को यूज करके आई ऑफ जेड, इन अ सिमिलर मैनर। इफ यू रिमेंबर वेव इक्वेशन, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन आ जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें मैग्नेटिक फील्ड वेव इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोल्यूशन हम फाइंड कर लेते थे वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते थे और इससे एच निकाल लेते थे। तो ये काम हम यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे कि करंट का सोल्यूशन फाइंड करने के बाद या वोल्टेज का सोल्यूशन फाइंड करने के बाद इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम यूज करके अदर पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लेट्स फाइंड आउट कि इन दो इक्वेशंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, आवर गोल इज टू derive an equation that involves only voltage or only I of z। ये क्वेश्चन हम कैसे ड्राइव करेंगे? अगर आप इस चैप्टर वन के उसके हिसाब से देखें तो हम क्या करते थे कि इस इक्वेशन को हम लेते थे और दोनों साइड पे कर्ल ऑपरेशन अप्लाई कर लेते थे। ठीक है, ताकि कर्ल ऑफ ये आ जाता था और यहाँ पे कर्ल ऑफ एच आ जाता था, और कर्ल ऑफ एच की जगह फिर हम ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर लेते। सो कर्ल ऑपरेशन अप्लाई करने का मतलब ये है कि कर्ल ऑफ ई में फर्स्ट डेरिवेटिव है, जब आप दोबारा कर्ल अप्लाई करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अगर आप देखें यही काम मैं अब इस पे करूंगा तो मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो लेट्स से इक्वेशन वन को अगर मैं यूज करूं, आई विल से टेक द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा किस चीज का, करंट का। और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ करंट का हमें पता है कि वो इसके बराबर है, तो उसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, सो टेक सो इस वक्त मैं एक ऐसी इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ कि जिसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वी ऑफ जेड, और इसी प्रोसीजर को फिर आप लोग अडॉप्ट करके फिर एक ऐसी इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं जिसमें सिर्फ करंट हो। ठीक है, so I'm just focusing on this equation. So second derivative of voltage square, और फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल डेरिवेटिव ऑफ करंट। एंड देन जो मेरे पास डी आई बाई डी जेड है, इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। डी आई बाई डी जेड की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस जी प्लस जी ओमेगा सी इंटू वी एफ जेड। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो आर प्लस जी ओमेगा हो जाएगा इंटू जी प्लस जी ओमेगा सी हो जाएगा और इंटू वी ऑफ जेड। So now you can see that we have end up with an equation जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको v of z नजर आ रहा है। इस इक्वेशन को so this is our required equation
but I'm going to introduce a notation in a similar manner जो हमने चैप्टर 1 में किया था. So let me go back. इन इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी वो इस तरह की थी. Something like this. Now ये जो हमने टर्म इंट्रोड्यूस की थी गैमा, यहाँ पे बेसिकली कुछ पैरामीटर्स थे प्रोपगेशन कांस्टेंट को हमने जब यूज किया था. सो del square E minus some terms that has been replaced by gamma into E. इस वक्त जो हमारे पास इक्वेशन है it appears exactly similar. So D सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v ऑफ z को आप रिप्लेस रेज्यूम कर सकते हैं कि वही चीज है कि जो आपके डेल स्क्वायर, ऑफ कोर्स डेल स्क्वायर में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी शामिल है, विद रिस्पेक्ट टू y भी शामिल है, विद रिस्पेक्ट टू z भी शामिल है. सो इसको अगर हम सिर्फ ओनली z एक्सिस के लिए देखेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास सिर्फ z डेरिवेटिव रहेगा. एंड देन वी हैव दिस कांस्टेंट टर्म एंड देन v ऑफ z. सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म्स we are going to replace them with the same symbol जो हमने पहले यूज किया था. इसको भी हम गैमा कहेंगे और गैमा को मैं किसकी को लूंगा r प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी अंडर द रूट. और ये क्या चीज होगी? द सेम थिंग. इसको हमने क्या नाम दिया था? कॉम्प्लेक्स प्रोपगेशन कांस्टेंट. So just like there is a complex propagation constant for unbounded free space media, when the signal travels on a transmission line, it will also have its propagation constant. और again इस propagation constant को हम complex कह रहे हैं. इसका मतलब है कि ये जो expression है इसका कोई ना कोई real part होगा जिसको हम alpha कहेंगे, attenuation constant, और इस एक्सप्रेशन से जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से, और बीटा को हम कहेंगे कि ये इसका फेज कांस्टेंट. सो जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है अब हम उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखेंगे माइनस गैमा स्क्वायर वी ऑफ जेड इक्वल टू 0. And because this equation, its mathematical form is very similar to the equation that we derived for अनबाउंडेड मीडिया जिसको हमने वेव इक्वेशन का नाम दिया था. ऑफ कोर्स इसको अगर हम कहेंगे इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेव इक्वेशन. तो अब यहाँ पे भी हम वही कंसेप्ट वही फिलॉसफी यूज करेंगे. इस इक्वेशन को मैं कहूंगा कि ये इक्वेशन है वोल्टेज वेव इक्वेशन. voltage wave equation, because the voltage over here is behaving as some kind of a wave which is traveling on a transmission line in a similar manner like electric field represent some kind of a wave that is traveling in any unbounded medium. Now what I have done is कि मैंने इन दो इक्वेशंस को लिया और एक ऐसी इक्वेशन डिराइव कर ली जिसमें सिर्फ और सिर्फ v of z. Now you may be asked to derive an equation using these two such that it only involve I of z. जस्ट लाइक कि अगर इन दो इक्वेशंस को कहा आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि कैसी इक्वेशन डिराइव करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो, तो आइडिया इज एक्जैक्टली सिमिलर. नाउ यू विल स्टार्ट विद दिस इक्वेशन. यू विल टेक दिस इक्वेशन, यू विल टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑन बोथ साइड. तो लेफ्ट साइड पे आपके पास
डी स्क्वायर आई जेड ऑफ डी जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑफ आई जेड, और यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वी ऑफ जेड, एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ वी ऑफ जेड की जगह आप ये लिख देंगे। सो एग्जैक्टली सिमिलर इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। सो आई विल से सिमिलरली we can get और इस इक्वेशन को फिर हम कहेंगे करंट वेव इक्वेशन, करंट वेव इक्वेशन। नाउ इन चैप्टर 1 जब हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी, फिर हमने कहा था कि इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना, ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर पता चले कि इस इक्वेशन का कंसेप्चुअली मतलब क्या है। In a similar manner, now we are having these two second order differential equations. ठीक है, these are the second order differential equation. तो इसका solution हम कैसे find करेंगे? So again, they are very similar, very simple equations. So मैं अगर सिर्फ पहली जो equation है, दोनों exactly दोनों की फॉर्म बड़ी सिंपल है, सेम है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा उसी तरीके का सोल्यूशन इसके लिए भी होगा। ओनली थिंग के v ऑफ z की जगह i ऑफ z, ठीक है। सो लेट मी फोकस ऑन दिस वोल्टेज वेव इक्वेशन। सो सोल्यूशन ऑफ वोल्टेज वेव इक्वेशन। सो ये जो इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सोल्यूशन आपके पास इस तरह का होगा। सो सम कांस्टेंट जिसको मैं v नॉट प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, e पावर माइनस gamma z plus v naught minus another constant e plus gamma constant. So v naught plus v naught minus or arbitrary constants. So the solution that we get for voltage is like this. And if you look at this solution, and then if you go back to our discussion that we had for wave equation in chapter 1, so you can see the similarity. And based on that, I'm going to make the same statement that I made for electric field. और वो स्टेटमेंट क्या होगी कि ये जो सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ट्रैवलिंग वेव। और ये सोल्यूशन का जो सेकंड पार्ट है ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ट्रैवलिंग वेव। डिफरेंस क्या है कि जो फर्स्ट सोल्यूशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवलिंग वेव अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और जो सेकंड सोल्यूशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रैवलिंग वेव अलोंग माइनस जेड डायरेक्शन। इस इक्वेशन का अगर आप सोल्यूशन आप देखें, हमने जब फाइंड किया था इसका सोल्यूशन क्या आया था हमारे पास? इसका सोल्यूशन था हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ z वाज e प्लस e पावर माइनस gamma z प्लस e माइनस e प्लस gamma z. So you can see the similarity. ठीक है. Now once we know
Once we solve voltage wave equation, we will get the solution of voltage. And now we will be looking for the corresponding solution of current. And because current and voltages are related, they are not independent of one another. Just like electric field and magnetic field are dependent, in a similar manner, magnetic voltages and currents are related to this expression. So now, in order to find out the solution for I of z, I'm going to use this expression. So because V of z is known to us, so now I will substitute V of z over here. I will take its derivative and then divide it by this term, and it will give me the solution of I of z. So So how you are going to find the solution? Substitute solution of V of z into telegraph equation. That is this equation. So all you need to do is take the derivative of voltage with respect. So when you take the derivative of voltage with respect to z, so from the first term you will end up with minus gamma into this thing, and when you take the derivative of this thing, you will get plus gamma into this thing. So I'm going to say what you will get from this: minus gamma plus gamma equal to minus take minus gamma as common. So you end up with V naught plus e power minus gamma z minus V naught minus e plus gamma z equal to minus r plus j omega l into I of z. We are interested in I of z, so I will bring this on the left side. This minus and minus will cancel out. So what you will get, the expression for current I of z will be equal to gamma divided by r plus j omega l into v naught plus e power minus gamma z minus v naught minus e plus gamma z. Now this term, this is another important parameter that we will be using throughout this course, and that is if you bring this gamma into the denominator. Okay, let me bring this gamma into denominator. So current is equal to 1 divided by r plus j omega l divided by gamma into v naught plus minus v naught minus e plus gamma. This term in the denominator is going to be replaced with a symbol z naught. So z naught is equal to r plus j omega l divided by gamma. And what is z naught? Is known as characteristic impedance. Characteristic impedance
of transmission line. So the final form of the current solution is going to be represented by 1 over z naught v naught plus e power minus gamma z v naught minus e plus gamma z. Now you remember that when this is something which we were discussing in our first chapter, okay? So we transform, we started with these two Maxwell equations, we converted them into either electric field wave equation or we can also convert them into magnetic field equation. फिर इसका हमने solution find किया था. And once we know the solution of electric field, फिर हमने इसको यहाँ पे substitute करके magnetic field का solution निकाला था. और magnetic field के solution find करने के दौरान में इसी तरीके से हमारे पास डिनोमिनेटर में एक जो टर्म आ रही थी उसको हमने क्या नाम दिया था? Eta, sir. Intrinsic ईट impedance. यस यस उसको हमने ईटा से रिप्रेजेंट किया था और उस ईटा को हमने क्या नाम दिया था? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस. सो नाउ यू नो कि अगर हमारे पास सिग्नल या वेव फ्री स्पेस या अनगाइडेड मीडिया में 3 डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा होता है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशनशिप है वो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के थ्रू रिलेटेड है. और ट्रांसमिशन लाइन में अब हमारे पास क्या है कि जो वोल्टेज और करंट का जो सोल्यूशन है वो रिलेटेड है थ्रू अनदर इम्पीडेंस, लेकिन उसको अब हम इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के बजाय उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कह रहे हैं और उसके लिए हम Z नॉट का सिंबल यूज कर रहे हैं. अब इस Z नॉट को हम इसकी फाइनल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मैं गैमा यूज कर रहा हूँ जिसको हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट का नाम दिया था, इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया था. यस हमने गैमा को किसकी जगह रिप्लेस किया हुआ है? तो गैमा जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी ये है. सो लेट्स सब्स्टिट्यूट गैमा की ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें ओवर हियर, सो व्हाट यू विल गेट? सो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज इक्वल टू R प्लस j ओमेगा L डिवाइडेड बाय गैमा और गैमा जो है इसके बराबर. So what you will get Z naught is R plus j omega L divided by G plus j omega. This is the equation that you will be using for characteristic impedance. Now, before we move to the next session, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं मेंशन कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो इसको मैं अगर V नॉट Z नॉट को मैं इसके इस तरह लिख लेता हूँ. You will get V naught plus by Z naught e power minus gamma Z minus V naught minus by Z naught e plus gamma Z. So this thing V naught plus और ये जो minus V naught इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि ये कांस्टेंट है जिसको मैं I नॉट प्लस करूंगा और ये एक और कांस्टेंट है जिसको मैं I नॉट माइनस कहूंगा. ठीक है. तो जिस तरह वोल्टेज की सोल्यूशन में